to ashes, but only jealous sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you live. Chitali ji, please continue with your introduction. या सबसे पहले यहाँ पर सभी महिला जो अभी उपस्थित है उनको सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। और एक्चुअली मेरा नाम चैताली, आपने अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया। एक्चुअली मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। ओके। और मेरा एजुकेशन MBA मार्केटिंग से हुआ है और उसके बाद मैंने 4 ईयर वर्किंग किया है IDBI बैंक में। उसके बाद मेरी शादी हो गई और अभी मैं हाउस वाइफ हूँ और उसके साथ साथ मदर ही हूँ। ओके, गुड। और एक्चुअली यहाँ पर मैं बात करने के लिए इसलिए हिचकिचा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी मैं अभी देख रही हूँ, यहाँ पे मतलब सारे वेल एजुकेटेड और प्रोफेशनल है और मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ पर। नहीं, आप भी इतना एजुकेटेड है ना, MBA कोई कम क्वालिफिकेशन थोड़ी होती है, ऐसा मत फील कीजिए आप। और यस सब मैम। लोग ही और अपनी मैम यहाँ पर सभी वर्किंग है और सभी में एक कॉन्फिडेंस है, इंडिपेंडेंट है और सभी अपने अपने पैरों पे खड़े हैं और सभी वर्क कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड मैम, काफी नहीं, अच्छा लगता है। चिताली जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपको लगता है कि हाउस वाइफ होना या मदर होना कोई काम नहीं है क्या? सबसे बड़ा यस यही काम है। और मुझे लगता है कि आप हम में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क कर रही हैं, सबसे मुश्किल काम तो वही है। क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं और उन्हें मैं कैसे संभालती हूँ ये सब करने के साथ साथ वो मुझे ही पता है। बट हाँ, यस मेरे मैम। हस्बैंड का मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। बट फिर भी जो एक मदर का काम है ना, वो मदर को ही करना होता है। आप उसके अलावा आप राइट। कुछ भी करोगे, लेकिन आपको बच्चों से, घर के कामों से छुट्टी तो नहीं मिल सकती। नहीं नहीं। उसके बावजूद ये सब करना मुश्किल काम तो है, लेकिन जो आप कर रही हैं वो तो सबसे बड़ा काम है। मैं भी लास्ट ईयर तक यही कर रही थी। यस मैम, ऑब्वियसली हाँ, मैम। बोलिए बोलिए, आप जो भी बोलना चाहती हैं बोलिए चिताली जी। और मैम अभी साथ ही में एक्चुअली मैं बेबी छोटा था, इस वजह से मैंने कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन अभी मैंने एक छोटा सा मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है विद कुछ लेडीज है उनके साथ में। और वो ज्वेलरी सेलिंग और उसके क्लॉथिंग सेलिंग, बैग सेलिंग ऐसे करती हूँ मैम मैं, और उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। और मेरा खुद गुड। का एक ब्यूटी पार्लर भी मैं चलाती हूँ, अभी भी मैंने स्टार्ट किया है। और मैंने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स किया है। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत अच्छा यस कर रही हैं आप तो। आप एंटरप्रेनर बन चुकी हैं ऑलरेडी। एंड आई यस विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर बिजनेस। यस मैम। और मुझे काफी अच्छा लगता है मॉडलिंग में शूट करना या फिर मॉडलिंग करना। एक्चुअली मेरा जो आगे का विजन है वो यही है कि मैं कुछ खुद के लिए करूँ और खुद के पैरों पे खड़ी हूँ। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सोचा है आपने और जरूर करिए। क्योंकि आपकी लाइफ में आपने बताया आप IDBI बैंक में काम करते थे, जॉब करते थे। आपने शादी के बाद छोड़ यस दिया है, आप हाउस यस वाइफ बन गई हैं। बट ठीक है, अभी आपने बहुत अच्छा सोचा है जो आप आगे करना चाहती हैं। और असली वुमन एम्पावरमेंट यही है, आप कभी गिव अप नहीं करते हो। अभी आपने सब कुछ आपकी लाइफ में कर लिया तो आप आगे जाने के लिए सोच रहे हो। वी विश यू ऑल यस द वेरी बेस्ट इन योर यस फ्यूचर मैम। एंडेवर्स। सो यस चैताली जी, और कुछ बताना चाहती हैं आप अपने बारे में, या फिर आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगी, सेकंड क्वेश्चन का? यस मैम, मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और प्लीज। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? नहीं नहीं, आपको जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो प्लीज बोलिए यस सबके यस सामने। मैम। इंग्लिश यस हिंदी। मैम, आपने तो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था कि वुमेन्स डे क्यों सेलिब्रेट करना जी। चाहिए। एक्चुअली मैम वुमेन्स डे सबको लगता है क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, सब बोलते हैं यार ये क्यों करते हैं सेलिब्रेट, हम्म। क्या जरूरत है। जी। ऑब्वियसली मैम, इतने सारे सेलिब्रेट हम कर ही रहे हैं, वुमन सेलिब्रेट क्यों नहीं करना चाहिए। वुमेन्स अगर हर वन वन बाय वन ईयर आता है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ करती है, सबके लिए सबके बीच में रह के सबको सबके बीच में रह के सभी का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करती, घर में ही रहती है। तो
एक दिन होना चाहिए ना मैम सेलिब्रेशन के लिए, उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, तो ये मुझे लगता है। और मैम एक्चुअली मैंने एक छोटी सी एक कविता लिखी है वुमेन्स डे के ऊपर। जी बिल्कुल बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। मैम, यस, दर्द भुलाकर मुस्कुराती है वो नारी है, जो घर बनाती है वो नारी है, अभी रास्ता हो रहा है रोशन, देखो कई नारी तो नहीं है, तो कहीं सबका ध्यान रखती है, सबका दुख दर्द बांटती है, दुनिया क्यों कहती है नारी कमजोर है, वो सबका एक रोल निभाती है, कभी माँ बहन, कभी प्रेमिका, कभी ननन, कभी भाभी, सबका वो एक रोल निभाती है, तो क्यों कहते हैं नारी एक कमजोर है, मानो तो वो शीतल है, ना मानो तो ज्वाला, नारी एक खूबसूरत एक वर्ड है जो सबको भाती है। बहुत अच्छे से ताली जी ये आपने। मैंने ये मैंने खुद लिखी है मैम। एक्चुअली थोड़ा सोचा क्या इसमें नहीं नहीं, ऐड करना बहुत चाहिए, अच्छा लिखा है काफी आपने, सारा बहुत अच्छा लिखा है, एंड यू आर सो टैलेंटेड। आप इतनी सारी फील्ड में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हो, आप पोयम भी लिख रहे हो, टैलेंट का खजाना है आप। है। थैंक यू चिताली जी, आपका मैम पोयम। एक्चुअली इसके पहले मैम आसिया मैम आए थे, जी। एक्चुअली मैंने उनकी भी एक बात सुनी। और अच्छा मैम मैं भी काफी सारे एक्चुअली मैं एक विलेज में ही रहती हूँ, यहाँ पर एक छोटा विलेज है, तो अच्छा। काफी सारे यहाँ पर मैम गवर्नमेंट के थ्रू महिलाओं के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती, क्योंकि मैम ये देखिए, अगर वुमेन्स इंपावरमेंट यानी कि वुमेन्स के लिए सिर्फ हम ही नहीं, बाकी सभी गवर्नमेंट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, और जी। गवर्नमेंट भी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ सुविधा ला ही रहे, लेकिन वो महिलाओं तक नहीं आ रहे मैम। जी। महिलाओं को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है कि अभी क्या महिलाओं को क्या अभी मिलना चाहिए क्या नहीं, ये सभी बातें हैं मैम। जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिलाओं को अगर उस जो सर्विस है उसके बारे में अगर पता चलता है, तो वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है, कुछ कर सकती है, इंडिपेंडेंट बन सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अवेयरनेस जो कि नहीं है ज्यादातर लेडीज को उनके राइट्स के नहीं, बारे में, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला, तो वो अगर हो जाए तो सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जो भी उनके ड्रीम्स हैं या उनको अपॉर्चुनिटीज जो नहीं मिल पा रही, वो मिलने से वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने चैताली जी। मैम। थैंक यू सो मच आपके व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैम अगर मेरे से कोई बातों में गलती हो गई तो आई एम सॉरी। और नहीं नहीं, बिल्कुल गलती नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा, एंड आई होप सबको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज चैताली एक्चुअली जी को मैम एक मैं बार thumbs up होता काफी है। सालों के बाद मतलब बाद में मैं जूम मीटिंग पर पहली बार आई हूँ, और मुझे काफी मतलब नर्वस फील हो रहा था। मैं कैसी बात करूँ। नहीं नहीं, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सब आप ही की तरह है, सभी यहाँ पर लेडीज भी हैं, और मैम, सभी आप ही की तरह कोई ना कोई बैकग्राउंड से हैं। आप यस नर्वस मैम। या आपने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, और आपकी पोयम भी बहुत अच्छी लगी हमें। थैंक यू थैंक सो यू। मच। या थैंक यू। थैंक यू। now you can mute yourself, and can we continue with Smita Oja ma'am? Good morning, beautiful ladies. It's Good about to be good morning. afternoon, actually. Yeah. So, earlier I was very skeptical about attending a session with women I don't know. But as I heard, women talking, I could almost relate to everyone, either their views or their passions or whatever. And in fact, Shruti, with you, I have 4 things in common. I was writing it down. One is the Delhi Connect. I have been born, brought up, spoiled in Delhi. But currently, I'm in Vishakhapatnam because my daughter is pursuing her degree here. So I'm Okay. just helping her out, with her MBBS degree. Then the MA English Connect. My father was a professor of English literature in Ramjas College, Delhi University, and he was a doctorate. So that reminded me of him, your qualifications. And the latest book, Shruti, that you've written, it features one of my friends who was the Mrs. India 21, I guess, Mavati. So she is the one who told me Right. about this. She said, Shruti is a dear friend, so you must take out time to, attend this session. And she's saying I am featuring in her book also.
So I would love to read that book, about that. And of course, I connect with the feminism and about our desire to help women and, empower them. So I'll give a brief introduction. I am Smita Ocha. I have 15 plus corporate years experience, but now I'm a homemaker by choice. Nobody forced me into it. I am a PG, postgraduate in commerce with a BA degree. And, to fulfill my mother's last wish, I would love to pursue doctorate someday. I don't know which field, but, it's a wish that I wish to accomplish for her. And, I left my career about 13 years back just to take care of my children. And I thought, my husband told me that you won't last for more than 6 months. You will want to go back to the corporate world. But I utilized that opportunity to, pursue things that I'm passionate about. I realized that, I'm so much into writing. So I got associated with a lot of platforms which empower women. And there's a platform by the name of Sipping Thoughts. I'm, part of their, group, and I write blogs for them on women empowerment. I hold monthly sessions with them, which is just a, informal gathering where, all movie lovers come together and discuss movies. So these 13 years, I would say, were the best years of my life, because I learned to value myself, to know what I'm passionate about, and, to add value to my children as well. So, like the lady, I forgot her name, was Chetali. I think the Yeah, she last was speaker. speaking before you. Yes, yes. Yeah. I mean, we all are same. It's not that somebody's achieving high or somebody's achieving low. Everybody here has contributed enough in their own sweet way. You cannot compare an apple to an orange, right? So you can't say that, she's an entrepreneur and she's doing so well and I'm nothing. And in fact, I've seen both the worlds of a corporate world and a homemaker. And both have their different challenges, right? And initially, I used to feel very, not embarrassed, but very awkward when somebody asked me, "What do you do?" And I'm like, "Oh shit, yeah, I'm a homemaker," that way. But now, homemaker is much more taxing, much more, involving. It's emotionally draining. And believe you me, for the last 2.5 years almost, I am with my daughter, leaving everything behind. My husband is alone with my father-in-law. My son is studying somewhere else, and only to help her pursue her degree because she didn't want to go back to the hostel after the COVID hit. So, I mean, it's very difficult. Motherhood is difficult, and being a homemaker is extremely difficult as well. So, we should not demean ourselves, saying that I'm just a homemaker. And to the question about Women's Day, Dr. Nidhi stole my idea. I wanted to relate it to birthdays because we celebrate birthdays to celebrate a person, to celebrate the life of a person. Not that we don't value the person 364 days, but that particular day, we go out of our way to show our love, show our care for that person. So basically, Women's Day is a day where you value the women in your life. You try and uplift the women around you. And it's not a big deal, believe you me, if you start with the people working for you. Like, I don't have time to go, to maybe a center where I can help women, or to set up an institution where I can empower women by giving them work opportunities. But the people, ladies who are working for me, I'm supporting them in my own way. Either I'll pay for their education, or I'll pay for their stationery, or whatever which way possible. That is what I'm doing. And I believe, people who are associated with you, if each one of us is just empowering those 3-4 people, I think we can achieve a lot. Half the time we don't make efforts because we feel I don't have the resources, I don't have the time to make a big impact. But all the big impact starts with small impact. So I think everyone, if surrounding us, if we empower, we'll go a long way. And basically, it's a day where we should not only should celebrate women, but we should also take a stock and realize how far have we come, where were we last year versus where are we now, and what all needs to be done so that we are better for the next coming year and more geared up. Like, if every boy realizes that, how can I make life safer for a woman? So these are the things. And to your question, Shruti, when you said that feminism is not male bashing, in fact, I wrote a very interesting article on what feminism should not be, right? And this was one of the very important points, that male bashing is not feminism. Empowerment is all about equality and empowering people. It is not about showing that you are low and I'm high. It is about
treating everyone equally. And as a mother, what I have tried to ingrain in my children through their upbringing is that there is no job which is a male job or a female job. So both my children are, at par, because I've seen some households, even the educated ones, it's not that they are closed-minded, but it's just that the conditioning is such that if some guests comes, you'll tell your daughter to get the water. So a lot needs to change. We are making little beginnings, but as mothers, it's our responsibility to not only train our daughters to be independent, but to train our boys how to handle an independent woman. Many times the problem occurs because बच्चों को लड़कियों को तो समझा दिया कि बिंदास बनो, but they can't handle those strong women. And I'd like to end by saying a small quote: be a strong woman so that your daughter will know how to be one, and so your son will know what to look for in a woman. So to all the beautiful ladies here, let's uplift each other and let's stop women bashing. And let's stand there and be there for each other. It's a beautiful event. I'm so glad to be here. Thank you, Shruti, for this opportunity. थैंक यू सो मच स्मिता ओझा जी फॉर शेयरिंग योर व्यूज। और जो भी आपने कहा उसमें अब मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहती हूँ, शायद मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ कि जो आपने बोला कि आपके बेटों को भी बताना है तो वो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं वो फादर की भी होती है। मुझे लगता है कि मदर और फादर कंबाइंडली, क्योंकि जो पेरेंटिंग है वो हमेशा मदर के ऊपर ही डाली जाती है। बच्चे कुछ भी करते हैं तो फिर मदर ने नहीं सिखाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अगर आपने बेटे को सिखाने की बात की है तो उसके फादर को भी एग्जाम्पल बनना चाहिए, तो उनके फादर से शुरुआत होगी तभी बेटे भी सीखेंगे। बी एन एग्जाम्पल, अ लीडर ऑलवेज लीड्स विद एग्जाम्पल नॉट विद फोर्स। तो आपको खुद ही उसके लिए एग्जाम्पल पहले बनना पड़ेगा, और वो जो शुरुआत होगी मुझे लगता है वो घर के जो आदमी है उनसे ही हो सकती है। और सेकंड थिंग आपने जो अभी बोला था, जैसे चिताली जी ने भी कहा था कि आप होम मेकर हैं, या आपने अभी आपसे कोई पूछता है तो हाँ मैं होम मेकर हूँ, आपको कहने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो जनरली सारा क्रेडिट हीरो को, हीरोइंस को, उनके कॉस्ट्यूम्स को ही देते हैं, राइट। सो दिस इज, अभी क्या होता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, कोरियोग्राफर को कोई पूछता ही नहीं है। सो दिस इज हाउ अ वुमन फील्स ऑन डेली बेसिस। तो हमारा जो क्रेडिट है वो हमें कभी मिलता ही नहीं है, राइट। और जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आपका और मेरा 4 पॉइंट जो है वो सेम हुए हैं, मैं 5th पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। मैं भी विशाखापट्टनम में रहती थी लॉन्ग बैक तो मुझे भी विशाखापट्टनम मेरा फेवरेट सिटी है, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने पद्मावती को भी बताया था और बोला था, प्रॉमिस किया था जब कभी आऊंगी तब मिलूंगी, और अब की बार आएंगे तो आपसे भी जरूर मिलना होगा। Sure. Most welcome. I'd love to meet you in person. Same here. Thank you so much, Smita ji, for sharing all your views. Thank Happy you so Women's much. Day to you once again, filled with Yeah, joy and same to laughter. you. Thank you so much. Please mute yourself, Smita ji. Can we continue with Nidhi ma'am? Hi, Shruti. Hello, everyone. Very happy Women's Day. Apologies, my camera is not working. Still But it I is not really, working? Ma'am, it is still not working. yes, I've been trying, but somehow there is a problem. Anyways, I Fine. can see you all beautiful ladies, so it doesn't matter if you don't see me. So No problem. No problem. I just wanted to say a few words. I am really speechless after what Smita ji has said. She has shared some very wonderful thoughts. Just want to add a few things on that. To me, women empowerment, it starts with the fact that we are still going through a lot of discrimination on a human level. मतलब जो चीजें मुझे लगती हैं कि ये तो अब एग्जिस्ट भी नहीं करनी चाहिए. Every day I come across a lot of physical, mental, emotional abuse stories in the marriage. Not just by in-laws, or maybe sometimes most of them even by husbands, unknowingly as well. This patriarchal thought process is still going on so much, and we keep giving in because हमारी upbringing में भी हमें कभी एक strong stand लेना सिखाया नहीं जाता. Usually हमारे parents की मुझे लगता है थोड़ी यहाँ पे गलती है. हम हमारी जो जनरेशन है, हम अपनी बेटियों को स्ट्रांग बना रहे हैं, हम अपने बेटों को भी समझदार बना रहे हैं कि
किस तरह से यू नीड टू ट्रीट लेडीज, बट हमारी जो पिछली जनरेशन है, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने इस पे इतना एफर्ट नहीं मारा है. हमारी अपब्रिंगिंग में हमें हमेशा ये सिखाया गया, सेक्रीफाइस, पेशेंस, गलत है तो भी कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो. आई फील दैट इज वेरी रॉन्ग. First biggest point is, whenever you see abuse with you or with anyone, any girl around you, anybody around you, take a stand. गलत सहना सबसे बड़ी गलती है, और उससे आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को गलत बढ़ावा दे रहे हो. आप उनको गलत पे जब स्टैंड नहीं कर रहे हो, वहां पे रोक नहीं रहे हो, तो वो अननोइंगली और गलत करते जाते हैं, एंड यू गेटिंग इनटू अ होल. आप एक उसमें घुसते जाते हो. एवरी अदर डे आई एम पार्ट ऑफ, just sorry, I didn't give my introduction. I'm a BTech computers. I have around 15 years of corporate experience, and now for last 13-14 years I'm at home taking care of my kids and the home. Yes, I also at times really feel मैंने बहुत बड़ी गलती करी जॉब छोड़ के, मैंने होम मेकर बन के, क्योंकि I at times you do feel you are not getting that kind of credit when your family, your husband achieves the success. They keep saying, I am this, I am that. They don't realize they are that because we are there to back them up, right? They can only excel because we are taking care of the home front, we are taking care of their parents, we are taking care of their kids, everything. So then only they can focus their 100% on their professional life, right? So the credit has to be shared, but that doesn't happen. I don't care about that. My 2-3 important things for all ladies: one is always focus on your education. Please, 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 education is must. Financial independence is must. Never ever be financially dependent. Even if you don't need to earn money, even if you come from a very good family, जहाँ पे किसी तरह की आपको financial problem नहीं है, find something, to stand on yourself. It doesn't matter how much you earn or whatever, but it will give you a boost to your confidence. You can never. And the third thing is कि किसी भी गलत बात को कभी भी एग्री मत करो, बर्दाश्त मत करो. The very moment of abuse, take your stand with yourself or with anyone around you. In your family, if you see somebody is getting abused, even in your surroundings, if you see some lady needs help, give her a hand. अपनी मेड्स को, अपने फ्रेंड्स सर्कल में. तो अगर हम लेडीज एक दूसरे की अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे को बैशिंग ना करके हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे, तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अचीव एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट. So for me, Women's Day means that we should, abhi tak we have not received that equal status in the society. We need to achieve that. We are not trying to pull down anybody. We are not trying to go against men. We are trying to uplift ourselves as a group. That is for me real women empowerment. Please help each other. Please give us a hand to uplift each other, and just don't take any shit anywhere from anywhere. All right. So all the best to everyone, and that's all I wanted to say, Shruti. Thank you so much, Nidhi ma'am, for sharing your views with us. It was so wonderful talking with you. And आपकी बात सुनकर मुझे 2 लाइन्स याद आई हैं जो मैं आप सबके सामने बोलना चाहती हूँ. That be a part of the tribe that empowers, motivates, and inspires you, and speaks for the sisterhood. This is how, on this theme only, we have created Stree Mission. Nidhi ma'am, you can mute yourself now. And can we please continue with Archana Shinde ma'am? Are you there? Can you please hear me and unmute yourself? Hi Shruti, I'm there. Hi Archana ji. Please start with your introduction. Yeah, hi Shruti. Firstly, happy International Women's Day to all the wonderful ladies who are present here. So, thank you so as much. I told you, I did not prepare the article, but because this topic is so common and it is so relatable, I can talk about this. Archana ji, can you please switch on your camera? So yeah, sure. Everyone can see. Yeah, sure. Please. Sure. Yeah.
So yes, firstly, what is women empowerment? I think this platform is the best example. Here we all have gathered, we have taken out our what I can say precious time from our regular routines, and we are here to encourage ourselves. So this is the best example for women empowerment, I guess. And I'm Archana Shinde. Currently, I'm a corporate employee. So I have played all the roles. I had been a homemaker, and then I was working, then took break for my kids, and again I started working. So I think just now what Chetali ji said, that being a homemaker, she felt low, but no, that is the toughest job I felt. You have to be on your toes all the time. You have to be available for everyone, and because of that, everyone in your family is able to do what they are doing peacefully. So Right. that's the toughest job. And why we celebrate Women's Day? I think it's the day to recognize, to value all the things women do. So for me, like two of our ladies said, it's like a birthday. I felt it's an annual day. Because on the annual day, what we do is we recognize throughout the year's hard work, right? So for me, I feel it's an annual day to recognize all the efforts which we do in our day-to-day work activities, or in a professional or personal lives. So that's kind of a thing. And it's a day where we all should encourage and motivate other women. So there are women who think or who don't have that facilities. So we should come forward and help each other. So I guess this is the main purpose of celebrating Women's Day. Not only get ourselves better, but help others to also become better. करेक्ट। अर्चना जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज, और आपका आंसर बहुत अच्छा लगा सभी को, आई होप। और कुछ Thank you, कहना Shruti. चाहेंगे आप? Yeah, thank you for giving me this opportunity. So it was nice. थैंक यू सो मच। एंड मैंने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है ये इवेंट क्रिएट करने की, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू Thank you. once Thank again, you. and wishing you a very happy International Women's Day, Archana ji. Yeah, you too. Thank you so much. Please mute yourself. Yeah. And we can continue with the Purnima ji. Purnima Katila ma'am. Please unmute yourself. Purnima ji, can you hear me? Purnima Kalita ji. Please unmute if you can hear me. Purnima ji, are you there? Okay. Rachna ma'am, can you please unmute yourself? Rachna Chaudhary. Hello everyone. Happy International Women's Day to all. Am I audible? Yes, you are audible. Can you please switch on your camera also? Yeah, it's on. It's on. Okay. Yes. Please Now, continue, Rachna ji. Please continue. We can see you. so my name is Rachna and I am a self-taught artist. Okay, so I basically make clay murals. और ये मैंने कहीं कभी भी सीखा नहीं, एज आई सेड कि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई मेरे बेटे के पैदा होने के बाद शुरू हुई, जब वो अपने स्कूल में गया। तो जो उसका फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे आजकल क्या होता है कि मतलब बच्चे के मोमेंट्स के आपको पिक्स मिलते हैं, राइट? तो उसका जो मुझे एक फोटो मिला स्कूल में लड्डू खाते हुए तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इसको एक बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखना चाहिए। तो मैंने उसके लिए एक, मेरे पास उस टाइम रिसोर्सेज नहीं थे कि क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं थी, तो मेरे पास चीजें नहीं थी कुछ करने के लिए। तो मैंने सिंपली एक
कार्डबोर्ड से एक फ्रेम बना के और मेरे बेटे की ही क्ले से मैंने उसको डिजाइन किया। तो फ्रॉम दैट मोमेंट मेरी वो जर्नी शुरू हुई और उसके बाद अभी तक मेरी जर्नी रुकी नहीं है, थैंकफुल टू गॉड एंड माय फैमिली। तो अभी जो मेरा पैशन बन चुका है और अब वो मेरा प्रोफेशन भी बन चुका है। तो तो वंडरफुल रचना जी, आजकल सभी को अपना जो पैशन है उसे ही प्रोफेशन भी बनाना चाहिए, क्योंकि आप मन लगा के काम कर सकते हो। राइट। बहुत अच्छा तो किया आपने, और आपके पीछे जो आर्ट रखा है वो बहुत सुंदर लग रहा हाँ, है। और एक्चुअली सब दिस कुछ इज, कमेंट आ रहे यहाँ हैं से मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो ओके। मुझे लगा कि मुझे ये वॉल ही चूज करनी चाहिए अपनी इस सेशन के लिए। और बेसिकली मैंने ये ज्वाइन ही इसीलिए किया है कि मैं इतनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज के साथ इंटरेक्ट कर सकूं, क्योंकि हमें इतना अच्छा मौका नहीं मिलता है कि हम कहीं बातें करें या कुछ करें, क्योंकि मेरी रहती है क्लासेस रहती हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, तो सारी चीजें रहती हैं। तो एज अ आर्ट, आर्ट को मैं समझती हूँ फॉर लेडीज कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो डे टू डे लाइफ है इतनी स्ट्रेसफुल रहती है ना। तो उसमें हमें अपने लिए काम निकालना चाहिए, थोड़ा सा कुछ करना चाहिए अपने लिए, चाहे आप आर्ट करते हो नहीं करते हो, डजेंट मैटर आपको, लेकिन कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये ना एक, इट्स लाइक अ मेडिटेशन, एक थेरेपी है कि आप स्ट्रेस आउट हो सकते हो अपने डे टू डे वर्क से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो मेरा भी, मैं ये सोचती हूँ कि थ्रू माय आर्ट मैं औरतों को स्किलफुली सारी चीजें सिखा सकूं और उनकी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर सकूं, ये मेरा मानना है। और लाइक विमेन, आपने कहा विमेन एम्पावरमेंट, तो मुझे लगता है कि औरतें तो पहले से ही एम्पावर्ड हैं, औरों को समझने की जरूरत है कि वो एम्पावर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिखाना चाहिए, उनको ही चाहिए ये सारी चीजें कि भाई हम ठीक है, हम हैं एम्पावर्ड, समझो हमें। बिल्कुल सही कहा रचना जी। आपकी बात पर एक छोटा सा सेंटेंस याद आ गया, जो गवर्नमेंट का स्कीम चलता है ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो अभी जी। लगता है बेटी पढ़ाओ तो सही, लेकिन बेटों को समझाओ, बेटियों को राइट। बचाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि औरतें तो देखो वो सब कुछ कर लेती है, मतलब कैसा भी काम हो वो कैसे भी करके कर ही लेती है ना, बिल्कुल सही। अपनी फैमिली के लिए, कुछ भी कैसी भी आपके सर्कमस्टेंसेस हो वो कर ही लेती हैं। बट और लोग जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट तो वो है उन्हें, एग्जैक्टली, डिपेंडेंट तो एग्जैक्टली। वो लोग हैं, हमें क्या जरूरत है। अपना काम खुद नहीं कर सकते, अपने बस। लिए खाना नहीं तो बना सकते, अपना हर चीज के लिए लेडीज पर डिपेंड हैं, और हाँ, उल्टा हमको बोलते हैं कि आप हमारे ऊपर डिपेंड हो। हाँ, तो समझना उन्हें चाहिए, उन्हें समझाने की जरूरत है, भाई तुम हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, हम नहीं है तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट। बिल्कुल 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 सही रचना जी, बहुत सही कहा आपने। और रचना जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? नहीं, बस मेरा ये छोटा सा ही इंट्रोडक्शन था, और बस यही मेरे व्यूज थे कि हाँ चलो मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं लोगों के साथ। और यहाँ पे इतने सारी ब्यूटीफुल लेडीज हैं और इतनी एजुकेटेड हैं, सब लोग अपनी अपनी फील्ड्स में इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सब चीजें सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं आगे भी इन सब चीजों से जुड़ी रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी, ये भी एक तरह का एम्पावरमेंट ही है जो आप लेडीज को सिखा रहे हो क्लासेस के थ्रू, उनको इंडिपेंडेंट बनने की आप ट्रेनिंग दे रहे हो। दिस इज ऑल्सो, जी। आप भी बहुत कुछ कर रहे हो। तो जैसे जी। सब लोग कर रहे हैं, आपका भी योगदान बहुत अच्छा है। एंड मैं थैंक यू सो मच रचना जी। और आपके बारे में, आपका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो आप थोड़ा बताइए प्लीज। वुमेन्स सिक्योर एक्चुअली सकते हैं मैंने ना लेडीज कुछ को इंडिपेंडेंट। प्रेपरेशन किया नहीं, कुछ मेरे दिमाग में आया नहीं। आप जैसे पता है कल होली थी, तो वो बहुत ज्यादा बिजी बिजी स्केड्यूल था पूरा ना, तो ऐसा ओके। कुछ था नहीं। बस यही मेरे थॉट्स हैं कि मुझे लगता है कि औरों को सिखाने की जरूरत है, हम तो खुद ही स्किलफुल एम्पावर्ड ऑलरेडी है। राइट राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। या, थैंक यू रचना फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस, और आपके बारे में बताया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। You can unmute yourself, Rachna ji, and